Good evening, students. I am Nupur. I teach maths on this channel. Alright. So today we'll be continuing with the triangles chapter. Alright. And today the chapter is already over. I'll be doing questions today. Okay. And I have taken certain difficult level questions. Okay. Starting में they are easy. But as we go further, the questions will become difficult. ठीक है, थोड़े R.D. Sharma level type questions हो जाते हैं. So don't just get panicked out while looking at the questions. I'll make you comfortable with every such question. ठीक है, and there are certain rules which you have known by now. ठीक है, आपने previous अगर lectures देखे हैं, you know what are the rules I'm talking about, all the congruency rules. ठीक है, I know, I hope you all know that, and all the parallel line rules also. And certain vertically opposite and linear pair algorithm that you know. I hope so. ठीक है? If you don't, ठीक है, then please watch the previous lectures. I would recommend everyone to please watch the previous lectures and then come on this lecture. Alright? Let's just start with the first question. ठीक है? Now this question is an easy one. ठीक है? Let me start with this. First of all, I am doing certain questions. ठीक है? So in this question, I'll be telling you how to approach every such question. Okay, so if we look at this diagram, we are given this diagram. Yes, we have certain two triangles. We are able to see two triangles. Yes, we have two triangles. Now let's just read the question. All right. So in the diagram, we are given OA equal to OB. Okay, so OA, this angle is equal to this. I hope this is visible. Okay, OD is equal to OC. So this is also given. All right. And we have to show that AOD triangle, that means this triangle, the lower triangle, is congruent. I hope you recognize this symbol. Yes, this symbol is a congruency symbol. So AOD is congruent to BOC. We have to prove this. Alright. I hope you know कि हम proving questions generally triangles में करते हैं. All these geometry type of chapters we usually show certain things या prove certain things. Alright. ठीक है, ये हम करते हैं in this chapters. All the geometry related chapters. Okay. And then second is we have to prove AD is parallel to BC. That we'll see further. ठीक है, इसमें भी एक नया rule है. I'll tell you that. Let's just go पहले धीरे. ठीक है. So let's just look at the triangles we have. We have AOD and we have BOC. Yes. So first, let me see. Now आपको पता है that for congruency we have certain rules. Yes. So we'll just try to match up rules कि कौन सा rule यहाँ पे apply होगा. Because होगा तो है. Because they have told us to show. Show means it is confirmed कि भाई कोई ना कोई congruency rule जरूर apply होगा जिसकी वजह से congruency जो है हम prove कर पाएंगे. ठीक है? So let's just start. So first we can see in the two triangles we have OB in one triangle and OD in another triangle which is equal. So that is a side. Let's just write side. ठीक है? Then we have OB is equal to OA. ठीक है? So OB in one triangle and OA in another triangle. Again we have a side equal. First of all, what we actually think of is SS we have got. तो या तो यहाँ पे ASSA is not a rule. ठीक है? या तो यहाँ SSS आ सकता है. There's only one rule, SSS हो सकता है. Okay. First of all, first think this. I told you कभी भी any rule that applies is applied to consecutive things. Yes, I told you कि अगर मैं SSS बोल रही हूँ sorry, so if I am telling I have applied a rule SSS, what does that mean? That my side, all the sides which are equal of two triangles are consecutive. I hope this concept is clear to everybody. So if I actually apply this, what I have is one side equal. Okay, there's a side equal. I can see that side equal. There's another side equal. Alright, there's another side equal. अगर मुझे इस रूल को SSS बनाना है, then I have to have BC equal to AD. But is it given in the question that BC is equal to AD? No. That means SSS cannot be applied. Yes. Let's just recall certain rules. हमने क्या क्या पढ़ा था? Are we given BC and AD parallel? तो हम parallel line का कोई भी rule apply नहीं कर सकते. There's only one rule. When there are two intersecting lines, there's a rule called as vertically opposite. I have told you this. Yes, जब भी आपको intersecting lines दिखे, always check out for vertically opposite angles. We can see that BOC angle
can be equal to AOD angle? Yes, can you see that? These are vertically opposite. So what does the rule apply? Rule क्या apply हुआ? If we see, rule क्या apply हुआ? Let's just correct this. क्या rule apply हुआ? This side is equal, okay. Then again a consecutive कौन सा angle is equal, and then again a side is equal. What is the rule? SAS. Yes, side, angle and side. ठीक है? So consecutiveness देखनी है, that is important. So we have proved by SAS rule these two triangles are congruent. I hope this concept is clear. ठीक है? Now we have to prove AD is parallel to BC. ठीक है? Now whenever the two triangles are proved to be congruent, ठीक है? There's a rule called as corresponding parts of congruent triangles. ठीक है? जिसे हम basically CPCT बोलते हैं. ठीक है? CPCT. अभी के लिए तो आपको I am telling you the actual line of this, the full form of this, that is congruent part of corresponding parts of congruent triangle. ठीक है? ये इसकी full form होती है, but you can actually call it as CPCT. ये क्या rule होता है? I'll tell you. This rule basically states that whenever two triangles are proved to be congruent, ठीक है? उन दो triangles में any side which was not equal earlier can be equal after congruency. Any angle that was not equal can be proved to be equal. ठीक, मतलब मेरा क्या है? I'll just tell you. ये जो रूल है ना, this is a very kind of a very easy and बहुत चीजें easy बना देता है ये रूल. I'll tell you what easy it makes. It actually tells, CPCT rule ये कहता है that whenever I have proved these two triangles are congruent, yes. Now इसमें मुझे बताओ what was not given. क्या नहीं given था? After congruency इसमें सब कुछ equal है. जैसे I can prove कि my BC is equal to AD. ठीक है? I can prove that. This can be proved कि BC is equal to AD after CPCT apply करने के बाद. I can also prove कि this angle is equal to this angle. This can also be proved. ये CPCT जो है ना, ये सब कुछ prove कर देता है. Then I can also prove this angle is equal to this angle. This is also CPCT. ठीक है? जो भी कुछ दोनों ट्राइंगल में इक्वल नहीं था वो इक्वल हो जाता है आफ्टर अप्लाइंग दिस CPCT. ठीक है? सो मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली देखा कि अच्छा दिस एंड दिस आर इक्वल. ओके, दिस एंड दिस एंगल्स आर इक्वल. व्हाट डज दिस मीन? कैन आई से दिस एंगल एंड दिस एंगल में रिलेशन क्या है? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इफ BC is parallel to AD, अगर मैं BC को पैरेलल कर दूं, if I say BC is parallel to AD, ठीक है, can I say that this OCB angle is equal to ODA angle? Yes. अच्छा, can I say vice versa? उल्टा बोल सकती हूँ मैं, अगर ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल है. That is what I have proved. मैंने क्या बोला? That because due to CPCT, this angle and this angle were equal. That means BC is parallel to AD. This was because of what? Because of CPCT. I hope the concept is clear. ठीक है, पहले मैंने congruency prove करी by SAS. Then using this CPCT, that is corresponding paths of congruent triangles, because of this rule, I have proved that BC is parallel to AD. And how did I prove? I hope you all are clear with that. ये CPCT के रूल्स याद रखना है. रूल्स क्या है? इट्स जस्ट वेरी सिंपल. द नेम इज जस्ट थोड़ा सा ऐसा बहुत बोल्डेड नेम है, बट इट्स वेरी सिंपल. आई होप द कॉन्सेप्ट हैज बीन वेरी क्लियर टू यू. ठीक है? दिस इज जस्ट द सोल्यूशन. आई होप यू कैन रेफर टू द सोल्यूशन फर्दर इफ यू वांट. द PDF ऑफ दिस आल्सो यू कैन रेफर टू द सोल्यूशन. ठीक है? मैंने सारे सोल्यूशंस इसमें डाले हैं. अभी आई एम जस्ट फोकसिंग कि मैं आपको कैसे अप्रोच करवाऊं टू द क्वेश्चंस व्हिच आर coming in front of you. ठीक है? कैसे सोचना होता है, how to actually think. ठीक है? Now I have another diagram as you can see. ठीक है? ये एक अलग डायग्राम है. ठीक है? मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ. Okay. Now I hope the diagram is clear to everybody. ठीक है? So what does the diagram say is, देखो, I have a line. ठीक है? I have a line L. ठीक है? As you can see, I have a line L. I have a triangle APB. ठीक है? और there's a line L which cuts AB at C. हमें दिख रहा है, ये तो डायग्राम से ही पता चल रहा है. I'm not saying anything new. ठीक है?
व्हाट डज द डायग्राम, आई मीन द क्वेश्चन से AB इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, वो तो हमें दिख रहा है. लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आई होप द वर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज क्लियर. मतलब क्या है, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू AB एंड बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर मतलब इट divides this into equal parts. मतलब AC equal to BC. What we are given is AC is equal to BC. ठीक है, हमें ये चीज given है. ठीक है, I hope this is very clear कि क्या given है in the question. We are given AC equal to BC. हमें AC equal to BC दिया हुआ है and we are given that PCB is 90 and obviously vice versa ACP is also 90. I hope the diagram को देखना. Okay. Now, if a point P lies on L, ठीक है, यहाँ पे देखो, a point P lying on L, prove P is equidistant from A and B. पहले तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है we have to actually prove P is equidistant. What does equidistant mean? Equidistant मतलब हम लोगों को prove करना है. We have to prove this, alright? This is not given in the question. We have to prove कि we have, what do we have to prove? Let me just write it. ठीक है, हमें क्या prove करना है? We have to prove AP is equal to P. हमें ये प्रूव करना है. Why? Because equidistant from AB मतलब A पॉइंट से और B पॉइंट से P equidistant है. मतलब this line is equal to this line. Yes, ये हमें प्रूव करना है. तो प्रूफ भी क्लियर है, गिवन भी क्लियर है. ठीक है. Now you have to prove. How do we prove? Okay. देखो, there is only one way. ठीक है, अभी तक आपको जो सिखाया है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है. एंड आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी बाय CPCT रूल आपको जो भी कुछ और नया प्रूव करना है यू कैन प्रूव इट. यस, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, सो वी कैन टेक ओनली, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं व्हिच इज APC ट्राइंगल, यानी ये वाला ट्राइंगल, एंड PCB ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल. ठीक है, वी हैव टू एनीवेज प्रूव कि भैया ये APC ट्राइंगल एंड PCB ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. कैसे प्रूव करेंगे, दैट्स आवर जॉब. ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले तो वी हैव AC इक्वल टू CB. ठीक है, तो पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट राइटिंग इट, AC इक्वल टू CB. ठीक है, फर्स्ट तो हमें दिख ही रहा है. सेकेंड, वी कैन सी कि ये जो एंगल है, दिस एंगल 90 डिग्री एंगल, दे आर ऑल्सो इक्वल. सो लेट्स जस्ट राइट कि एंगल ACP एंड एंगल PCB दे आर इक्वल, विच इज इक्वल टू 90. तो हमें ये भी पता चल गया कि एंगल इक्वल. अच्छा, और क्या हमें दिख रहा है, कैन वी प्रूव एनीथिंग एल्स? यस, हमें दिख रहा है PC इज अ कॉमन लाइन. मतलब दोनों ट्राइंगल्स में PC इज अ कॉमन लाइन. व्हेनेवर वी हैव अ कॉमन लाइन दैट मींस दैट इज इक्वल. मतलब क्या है, PC इन वन ट्राइंगल इज इक्वल टू PC इन अनदर ट्राइंगल. यस, APC में अगर मैं देखूं, आई हैव PC. PCB ट्राइंगल में देखूं, आई हैव PC. दैट मींस PC इज इक्वल टू PC, मतलब एक कॉमन लाइन. ठीक है, so we have three rules. अच्छा, can we form anything out of this rule? We have S. Okay, we have S. Then consecutive we have A. ठीक है, then consecutive we have PC. So कौन सा रूल अप्लाई हो गया? By SAS rule, I have proved that triangle APC and PCB are congruent. ठीक है, so ये मैंने congruent प्रूव कर. अब by CPCT, ठीक है, CPCT रूल यूज करके, आई टोल्ड यू CPCT रूल यूज कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ठीक है, so, इस रूल से आई कैन प्रूव एनीथिंग व्हिच वाज नॉट इक्वल इन बोथ ऑफ दीस ट्रायंगल्स. मतलब आई कैन प्रूव बाय CPCT दैट दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन. आई कैन प्रूव दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. आई कैन प्रूव दिस एंगल टू बी इक्वल टू दिस. कुछ भी मैं प्रूव कर सकती हूँ. Which whatever was not equal in two of the triangles are equal now because of CPCT rule. तो हमें क्या जरूरत थी, हमें जरूरत थी प्रूव P is equidistant. हमें क्या जरूरत थी, AP और PB इक्वल हो जाए. हमें ये प्रूव करना था. We have got it. AP is equal to PB by CPCT. So we have proved this also. This was because of CPCT. ठीक है, let's just go to the third question. What does this question have? आई होप मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ. क्वेश्चन इज विजिबल, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव अ डायग्राम अगेन. देयर आर टू ट्राइंगल्स वी कैन सी. ठीक है, अभी हम देखते हैं हमें कौन कौन से ट्राइंगल्स की जरूरत है. ठीक है, ओके, नाउ वी हैव बीन गिवन क्या, टू ट्राइंगल्स हैं. वी कैन सी ABC एक ट्राइंगल है, यानी ऊपर वाला एक ट्राइंगल है,
एंड ABD एक ट्राइंगल है विच इज द बिलो वन ट्राइंगल। नाउ दे शेयर अ कॉमन साइड AB, दिख रहा है हमें, दे शेयर अ कॉमन साइड AB। पॉइंट्स C एंड D lie on opposite sides of AB, ठीक है, मतलब C और D जो है वो ऑपोजिट साइड पे है, वो भी हमें डायग्राम में दिख रहा है। ओके, ये क्वेश्चन तो समझ आ गया। नाउ व्हाट आर वी गिवन, क्या गिवन है, AC इक्वल टू BD, AC ओके, AC इज इक्वल टू BD, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। एंगल CAB, CAB यानी ये एंगल इज इक्वल टू DBA, DBA ओके, दिस, so these two angles are equal। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD। व्हाट डज दिस मीन, ऊपर वाला और नीचे वाला हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगेन वी विल जस्ट सी आउट फॉर रूल्स, ठीक है। सबसे पहला वी हैव गॉट अ साइड इक्वल, ठीक है, हम लोगों को साइड इक्वल मिल गई। वी हैव एन एंगल इक्वल, हमारे पास एंगल भी इक्वल दे रखा है। सो दिस एंगल हैज वी कैन सी ओवर हियर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। आई टोल्ड यू वन मोर थिंग, व्हाट डिड आई टेल यू, आई जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया था, व्हाट डिड आई टेल यू, यस, AB इज अ कॉमन लाइन, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी AB है, नीचे वाले ट्राइंगल में भी AB है, यानी AB इक्वल टू AB फॉर बोथ द ट्राइंगल। सो आई जस्ट राइट आउट द रूल्स कि क्या मैंने क्या बोला। AC वी हैव बीन गिवन दैट AC इक्वल टू BD फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है एंगल CAB दैट इज इक्वल टू एंगल ABD, ठीक है। This and the third what we are given, third में मैंने क्या बोला, that upper triangle में there is line AB, ठीक है, upper triangle में we have AB, below triangle में भी we have AB, so AB equal to AB obviously, so हमारे पास तीन रूल्स है। Okay, let's just see कि इन तीन रूल्स में हमारा कुछ हो भी रहा है कि नहीं। Okay, we have S, okay, then we have consecutive एक AB इक्वल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, and then consecutive हमारे पास एक और साइड इक्वल है। What is the rule by which we have proved congruency is SAS, ठीक है। So SAS से आपका प्रूव हो चुका है that these two triangles are congruent, ठीक। Let me just erase all of this because तो बहुत ज्यादा confusion हो जाती है, ठीक है। Now we have proved, this was given ना, मैं ये जो given था that I am just pointing। Now हमें पहला तो प्रूव करना है that these two triangles are congruent। अच्छा, बस इतना ही प्रूव करना था, तो we have proved, this is already proved, SAS से ये दोनों congruent है। I hope the concept is clear। अगर ये लोग बोलते हैं, मान लो कि we have to prove that BC equal to AD, हम CPCT से प्रूव कर देते हैं। We had to prove, अगर we had to prove BC equal to AD, हम CPCT से प्रूव कर देते हैं, ठीक है। I hope this concept is clear, CPCT का पूरा concept clear हो चुका है, ठीक है। नाउ वी हैव दिस डायग्राम, ठीक है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई एम गोइंग थोड़ा फास्ट बिकॉज कॉन्सेप्ट्स जो हैं मेरे को ऐसा लग रहा है दैट यू आर नाउ क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो सम रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट्स मैंने यूज करे हैं सो दैट यहाँ पे स्टिक हो जाए, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर डायग्राम, अगेन देयर इज अ ट्राइंगल, ठीक है। ओके, वी हैव बीन गिवन AB इक्वल टू AC, ठीक है। So AB is equal to AC, ठीक है, ये पहले से ही डायग्राम में दिया हुआ था। Then we had AD equal to AD, मतलब this is a common line for both the triangle, for this triangle and for this triangle, ठीक है। अच्छा, and we have been given ABD and ACD are equal। ABD कौन सा एंगल है, let's just see, ABD is equal and ACD is equal, okay, these two angles are equal, ठीक है। We have to prove ABD यानी this small triangle is congruent to AC, यानी this one, हमें प्रूव करना है। Let's just see again same thing, क्या करेंगे हम लोग, we'll apply certain rules, अगर rules apply हो गए अच्छी बात है, नहीं हुए तो we'll just see कि क्या करना है आगे, ठीक है। Okay. अच्छा, पहली चीज यहाँ लिखा हुआ is, ठीक है, मतलब हो सकता है कि ये प्रूव हो या ना हो, क्योंकि is लिखा हुआ है, we are not written show, इसका मतलब ये नहीं है कि show मतलब ऐसा है, they have asked us is मतलब हमें बताना है, हो सकता है कि congruent ना हो, ठीक है। अच्छा, let's just see, okay, we have a side equal, ठीक है, AB equal to, okay, let me just write, AB is equal to AC, ठीक है। Then we have angle also equal, ठीक है, let's just see ABD angle and angle what ACD angle, ठीक है। तो दो एंगल्स भी इक्वल हो गए, ABD angle is equal to ACD angle।
एंड वी आर ऑल्सो गिवन एज आई टोल्ड यू एक कॉमन साइड भी दी है, ठीक है। इसको ज्वाइन करते हुए लेट्स जस्ट सी कि यहाँ कोई रूल बन रहा है क्या। वॉट एवर आई टोल्ड यू ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया ना दैट कॉन्जिक्यूटिव थिंग, आपको कॉन्जिक्यूटिव से ही आपको रूल बनाना है। लेट्स जस्ट सी दैट। सो वी हैव एस, ओके, वी हैव अ कॉन्जिक्यूटिव ए, बट हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव एस नहीं है। आर वी गिवन बी डी इक्वल टू डी सी? नहीं, वी आर नॉट गिवन बी डी इक्वल टू डी सी। इसका मतलब आई कैन नॉट अप्लाई अ रूल ओनली, मैं कुछ और कर ही नहीं सकती इस क्वेश्चन। दैट मीन्स that ABD and ACD are not congruent. These are not congruent because ये rule ही नहीं apply हो रहा। As you can see, I told you, मैं वापस repeat करती हूँ, what AB we are given one side equal, yes AB and AC are equal, ठीक है, तो S वाला rule apply हो रहा है। Then consecutive angle is equal, तो ये दोनों angles equal हो गए। Then we have A also, but consecutive side equal ही नहीं है। DC और BD are they given equal? क्या ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल दिया है? नो, कॉन्जिक्यूटिव साइड ही नहीं इक्वल है। दैट मीन्स कि मैं रूल अप्लाई कर ही नहीं सकती, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, और कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में भाई, तो हम कर ही नहीं सकते इसको प्रूव। दैट मीन्स दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो प्लीज बी वेरी अवेयर कि क्वेश्चन में इज लिखा है या शो लिखा है। अगर शो लिखा है, शो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स अंदर एक सेटिस्फैक्शन है दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें कोई ना कोई रूल अप्लाई करके दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। बट इफ दे आर आस्किंग इज दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, देन यू हैव टू एक्चुअली सी विद योर विजिलेंसी कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, इज द रूल बीइंग अप्लाइड और नॉट, ठीक है। इसी तरीके से प्लीज, ठीक है। लेट्स जस्ट डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ बिगर क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो एज यू कैन सी दिस इज अ काइट, ठीक है। पहले तो लेट मी टेल यू वन प्रॉपर्टी ऑफ काइट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ काइट, एंड जनरली वो पता होती है, बट आई विल टेल यू, ठीक है, बिकॉज अभी इट्स जस्ट इन लर्निंग स्टेज, और लर्निंग स्टेज पे वी हैव टू बी वेरी इंक्विजिटिव टू नो थिंग्स, ठीक है। सो वी आर गिवन दैट दिस इज अ काइट, देखो ABCD इज अ काइट, ठीक है। सो ABCD इज अ काइट, नाउ दीज टू थिंग्स आर गिवन, बट ना कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, बोर्ड पीपल व्हाट दे डू इज दे जस्ट गिव यू काइट, और काइट के बाद दे जस्ट थिंक कि बच्चों को ये चीज पता होगी दैट काइट का एक रूल होता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट रूल, ठीक है। What is the rule is, if you are given a kite, ABCD for example, एक kite दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए that AB is equal to AD, ठीक, and BC is equal to CD। ये ऑलरेडी kite की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या होता है, AB is equal to AD, ठीक है, and BC is equal to CD, ठीक है। ये ऑलरेडी kite की प्रॉपर्टी होती है। So I'm just telling you so that अगर उन्होंने if they ever give you that this is a kite, or most probably they'll never give you such lines, ठीक है। ये ऐसा लिखेंगे नहीं that AB equal to AD and CB equal to CD, they will never give you, ठीक है। वो आपको ट्रिक करने की कोशिश जरूर करेंगे। That is why I just told you that this is an extra information, ठीक है। And we have two diagonals AC and BD, as you can see, and they intersect at O, as you can see in the diagram। We have to prove, what do we have to prove? We have to prove ABC and ADC as congruent, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, prove, यानी इसका मतलब है that they are congruent, we just have to see कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, and we have to just prove them as congruent, ठीक है। Let me just clear this so that चीजें थोड़ी सी visibility दिखे, ठीक है, because ये ticks and all ना they actually divert us, ठीक है। पहले तो ABC, लेट्स जस्ट सी ABC कौन सा है। ओके, ABC है बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, सो दिस इज द बिगर ट्रायंगल, एंड वी हैव ADC, सो दिस इज अगेन अ बिगर ट्रायंगल। एज यू कैन सी मैं जो टिक कर रही हूँ दैट इज अ ट्रायंगल, ठीक है। सो वी हैव दिस बड़ा वाला ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, हमें ये दोनों प्रूव करना है। लेट्स जस्ट सी, सो वी हैव वन साइड इक्वल, दैट इज AB इक्वल टू AD फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, ठीक है। वी हैव BC इक्वल टू CD, हमें अगेन एक और साइड इक्वल दी हुई है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स कैन बी इक्वल,
Can you please tell me in these two triangles? I told you. Yes, AC is common in both the triangles. That means AC equal to AC. So what are the rules that are applied? क्या बोला मैंने? AB is equal to AD. So side is equal. Okay. Second is BC is equal to CD. Okay. And third rule that is applied is AC is equal to AC. I'm sorry, this is AC. ठीक है? So AC equal to AC. कौन सा rule apply हो रहा है? All these three are consecutive. Can we see it? सारे consecutive. What is the rule? S. So by S rule, we have proved that two triangles are congruent. So our first part is done. ठीक है? हमारा first part तो done हो चुका है. ठीक है? मैं ये बाहर के जो टिक्स हैं ये हटा देती हूँ. ठीक है? अंदर के रहने देते हैं. ठीक है? Otherwise the diagram will only vanish. So let's just see. Now, what do we have to prove again is diagonals are perpendicular. That means AC is perpendicular to this. मतलब these two diagonals AC and BD are perpendicular. अच्छा, what can we do? Can you please tell me? क्या हम कुछ CPCT से equal कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं? Yes. अगर मैं कहूँ in these two triangles by CPCT rule, can I say these two angles are equal? Can I say BAC and so by CPCT, let me just write it down, ठीक है, so that आप लोगों को clear रहे. I'm telling B angle BAC is equal to angle CAD. Okay, BAC is angle equal to angle CAD. So these two angles are equal. Okay, so by CPCT, yes. Now, if I have to prove this 90 degree, तो कोई और तरीका है नहीं. ठीक है, there is no other way. You have to take certain triangles. You have to prove them congruent. ठीक है. Okay. Let me just take triangle AOB. Look at the triangle AOB. बहुत धीरे से धीमे समझाऊंगी. So triangle AOB. The triangle AOB. I'm just filling it with red. कौन सा triangle AOB? ठीक. And triangle AOD. ठीक है, this triangle, the small triangle. The smallest triangles which can be found, AOB and AOD. Okay. We have, now let's just try to make them congruent. अगर ये congruent हो गए, तो by CPCT we can actually do something further. ठीक है, अभी I'll tell you how to think that. So we have got AB equal to AD. ये तो question में already given था. ठीक है, by CPCT I just proved that this and this angle is equal in both of these triangles, and we know AO is common. तो मैंने क्या करा? The first rule I applied was AB is equal to AD. Then the second rule that I applied was angle BAO is equal to angle BAO. ठीक? And the third rule that I applied was AO equal to AO. Let's just see ये rule भी follow हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मैं ऐसे ही तो नहीं कुछ भी बोल रही हूँ. So let's just see, this side is equal, so let's just write S. Consecutive angle is equal, ठीक है, so we can write A, and then a consecutive side is equal, that is S. This AO is common, so by SAS rule, I just proved that triangle AOB is congruent to triangle AOD. These two triangles are congruent. Now by this, can I prove something? Can I prove something? इसके बाद तो I can only apply a CPCT rule. So CPCT से can I see something? Yes, I can. What can I see? I can see angle, this angle and this angle are equal. Are you able to see? Let me just write it out. AOB angle, ठीक है, and angle AOD are equal. Can you see that? AOB angle and AOD angle are equal. Now, because these angles lie on a straight line by linear pair theorem, can we say addition of both of them is 180 degree? Can we say that? Let's just write it as x. इसको हम x ले लेते हैं. That means x plus x is 180 degree. ठीक है? अभी तक everyone would have clicked कि मैं क्या कर रही हूँ. What did I do?
I just wrote 2x is equal to 180 degree. And what did I prove? X is 90 degree. That means my angle AOB is equal to 90 degree. I have just proved it. मैंने prove कर दिया what was asked in the question. ठीक है? So it is already proved. मैंने यहाँ prove कर दिया what was asked in the question. But I hope the process is clear. इस lecture को वापस से देखना because this question was very very important. And this is one of the hardest question of this chapter. ठीक है? ये सबसे difficult question है. And I can understand कि ये चीज सोचना is difficult. That is why I tried my best कि मैं आपको बिल्कुल baby steps के साथ सिखाऊं whatever I am doing in this question. ठीक? So please just rewatch this lecture once again. And please rewatch this question once again because बाकी questions were simpler. ये question is difficult to actually think about. ठीक है? And please practice such questions more. ठीक है? ऐसे question RD शर्मा में भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. Please practice those questions क्योंकि इसमें ना एक thinking process होता है. एक बार वो thinking process instill हो गया ना, you will actually be able to solve these questions within seconds. And I mark my words, you will actually solve these questions in seconds. आप master हो जाओगे इन questions के. But please practice. ठीक है? ऐसे questions please practice करना. Take my advice. All right? ठीक है? For today, I'll take a leave and please revise the lecture. इस lecture को revise करना. ठीक है? That is very very important. And for today, I'll take a leave. And if you have liked the video, please like, share, and subscribe to the channel. Okay? And I'll take a leave for today. If you want the PDF, please comment in the YouTube also, and you can actually DM us on our Instagram handle also. We'll send you the PDF also for this. Okay? So, bye bye. Take care.